अमरीकी सफीर पैगह जोन्स ने शहर हैदराबाद के पाइगा कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और 18वीं-19वीं सदी में तामीर किए गए 6 मकबरों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए अमरीकी हुकूमत के $250,000 वाले प्रोजेक्ट का ऐलान किया। यूएस एम्बेसडर फंड्स फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन के ताउन से ये 5वां कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर इस मंसूबे पर अमल दरामद करेगा। जोन्स ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि ये इनका हैदराबाद का पहला दौरा है, ताहम अमेरिका ने शहर में तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बहाली के लिए पहले भी ताउन फराहम किया है। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शानदार और यादगार मकामात और इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे इक़दामात का हिस्सा बनने पर फ़ख्र का इजहार भी किया। नए प्रोजेक्ट के ऐलान के बाद जोन्स ने आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के सीईओ के साथ गुंबदान पाइगा का मुआयना किया। उनके हमरा अमरीकी कौंसल जनरल जेनिफर लॉर्सन भी मौजूद थी। This is my first trip to Hyderabad, and it gives me great pleasure to launch this Ambassadors Fund for Cultural Preservation project to restore these spectacular Paigah Tombs. They are absolutely gorgeous. I couldn't have imagined just how wonderful this site was. Colloquially referred to as the Taj Mahal of South India, the Paigah Tombs are an architectural masterpiece of unparalleled craftsmanship that is being relearned in order to undertake the renovations. They represent a vital part of the rich tapestry of Telangana. This project is a 2-year, $250,000 investment in the history and culture of this region. Restorations like this allow the people of the United States to play a role in the nations and communities where we work in a way that transcends traditional policy issues. Ambassadors Fund for Cultural Preservation project implemented by the U.S. Consulate General in Hyderabad. Throughout India, a total of 23 Ambassadors Fund for Cultural Preservation projects have been implemented, representing a cultural investment over the past 20 years of $2 million. We look forward to supporting more such projects in Hyderabad and in the region. Thank you all for honoring this project by being here today. Thank you very much.